Alléluia. Qui est content d'être là. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons donner nos offrandes. Amen. Alléluia. Nous allons donner au Seigneur ce qu'il nous a donné. Amen. Parce que le Seigneur a été bon. Amen. Si Dieu te donne $1, combien retourne à lui? Un sou. 10 sous. 10 sous. Amen. Si Dieu te donne $100, combien retourne à lui? 10 dollars. Amen. Parce que si Dieu te donne la vie, il attend en ton retour que tu puisses lui donner ton adoration, que tu puisses lui donner ta gratitude. Ça commence ici. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en donnera plus. Amen. Nous sommes bénis de l'éternel. Souffle de vie, c'est une grâce. On ne la détient pas dans nos mains. On ne regarde pas ça dans nos mains. Ça appartient à Dieu. Amen. Donc quand Dieu nous donne, titre de reconnaissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Donc nos annonces rapidement. Donc nous sommes à la fin de l'année 2018. Et nous sommes reconnaissants que le Seigneur nous a permis de passer toute cette période. Il y a eu des hauts et des bas. Et Dieu nous a gardés. Amen. Merci Jésus. Donc chaque semaine, nous avons une étude. Amen. Chaque jeudi, à partir de 18h30. Ça fait déjà 3 semaines qu'on a recommencé à la nouvelle église. Amen. Parce qu'on veut prier. On veut passer du temps dans la Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On veut passer du temps dans la présence de Dieu. Un enfant ne se nourrit pas seulement avec un seul repas par semaine. Sinon, il va être malade. Il ne va pas grandir. Et il va mourir. C'est pourquoi Dieu nous ouvre une porte. Amen. Venez nombreux. Ça va être bon pour vous. Amen. Venez dans la maison du Seigneur. Venez écouter la parole du Seigneur. Vous allez être bénis. Nous allons avoir une collation après chaque service. Ça va être bon. On va beaucoup manger les beignets de Maman Thérèse. C'est bon pour la santé. Amen. Donc, les annonces, l'église, nous sommes dans la fête de Noël en ce moment. Ce sont les enfants qui prêchent pour nous. Donc vous êtes nombreux invités à Montréal. Venez voir ce que les enfants ont préparé pendant toute une année. Amen. Venez voir ce que les enfants ont préparé. Dieu est capable de parler au travers des enfants. Leur message est puissant. Amen. Donc venez nombreux si vous avez la possibilité. Parce qu'à Saint-Jérôme aussi, nos enfants
vont aussi prester pour nous. तिनीहरूले पनि वचन सुनाउनेछन् Amen. आमेन Ce sont des choses qui paraissent lointaines. यस्तो कुराहरू सोचेर ल्याउँदा पनि कहिले हुँदैन होला भन्छौँ होला Mais laissez-moi vous dire que l'Église est तर appelée मलाई à भन्न grandir. दिनुहोस् मण्डली प्रचार गर्नका लागि बोलाएको हो Et c'est la volonté de Dieu. परमेश्वरको इच्छा Que हो nous puissions enseigner à nos enfants les voies हामी du Seigneur. एकअर्का बच्चाले एकअर्कालाई परमेश्वरको बाटो सिकाउन सकेको Parce हौँ que si demain on part, किनभने यदि भोलि हामी il जानु faut पर्यो que भने quelqu'un continue कसैले निरन्तर l'œuvre de Dieu. वचन बाँड्नु पर्दछ Amen. आमेन Et c'est au travers de ces jeunes enfants. अनि यो चाहिँ हाम्रो सानो सानो Donc, nous allons बच्चाहरूद्वारा avoir une école du dimanche. यसै गरी हाम्रो सन्डे स्कुल हुनेछ Les enfants ne vont plus s'ennuyer बच्चाहरूलाई अल्छी हुने छैन parce qu'ils ont beaucoup de déficit d'attention. किनभने उनीहरू छिट्टै अरू कुरामा ध्यान लगाइहाल्छन् C'est pour cela qu'il faut avoir un service spécial. Il यसै कारण बच्चाहरूको लागि उनीहरूको विशेष आफ्नै सेवा हुनुपर्छ faut être là, il faut prendre soin. तिनीहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ Amen. आमेन Donc on veut des mamans यसै कारण हामी आमाहरू चाहन्छौँ qui sont en train de lancer une perche. यो चाहिँ जस्तै एउटा बल्छी हानेको Vous जस्तो qui êtes maman, जो आमा हुनुहुन्छ ce que vous allez apprendre à जो l'école, तपाईँ स्कुलमा सिकाउनुहुन्छ ça va être bon pour vous à la तपाईँहरूको maison. लागि पनि असल हुन्छ घरमा Parce que vous allez être capable de continuer. तपाईँले निरन्तर त्यो घरमा निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ Tu dis oui यसै कारण रुबी à l'école de dimanche. मण्डली सन्डे क्लासको Amen. आमेन Parce que tu vas apprendre à Raya la parole de Dieu. परमेश्वरको वचन राईलाई सिकाउनुपर्छ Amen. आमेन Gloire au nom de Jésus. परमेश्वरको महिमा हो Donc, l'église avance très bien. मण्डली त्यो नयाँ मण्डली राम्ररी अगाडि बढ्दैछ Les travaux sont presque à la fin. कामहरू सकिन आँट्यो Et nous sommes très reconnaissants र हामी धेरै धन्यवादी de छौँ toutes ces personnes qui ont participé. त्यो मान्छे Amen. एकजना Gloire au nom de आउनुभयो Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, le frère de lui était là. भाइदियो त्यहाँनिर थिए Le papa de Tek était là. टेक दाईको Frère Tek बाउ était là. दाई टेक त्यहाँ Il a apporté à manger. खानेकुरा ल्याए La sœur Thérèse était là. Elle a apporté à manger. दिदी तेराइज पनि हुनुहुन्थ्यो Amen. खानेकुरा ल्याउनु भयो Merci infiniment pour votre धेरै soutien. धन्यवाद तपाईँहरूको मद्दतको लागि Auntie Santa Maya, आन्टी चन्द्रमाया elles sont venues, elles ont उहाँहरू travaillé. आउनुभयो, काम गर्नुभयो Amen. Elles étaient dans la poussière. उनीहरू धुलोमा On हुनुहुन्थ्यो était en train d'enlever le plancher. जब हामीले त्यो भुइँको सामानहरू निकाल्दैथ्यौँ On donnait à Auntie, les gars, elle dit non, 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 non. हामीले आन्टीलाई त्यो काठहरू दिँदैथ्यौँ केटाहरूले भने होइन नदिनु नदिनु Faut pas être ça. अनि डरो बलिउनुपर्छ Amen. आमेन Elle dit qu'elle est très forte. आमाले भन्नुभयो कि म धेरै Elle बलियो a छु soulevé des gros sacs. अनि ठुल्ठुलो ब्यागहरू उचाल्नु भयो Amen. आमेन Comment ça? अनि तपाईँले भने कसरी Elle nous défie. उनले त हामीलाई च्यालेन्ज गरे यत्रो गर्नु कुरो उचाल्नलाई Et भनेर। on était très र contents. हामी धेरै खुसी थियौँ On était vraiment wow. धेरै छक्कै पऱ्यौँ वा Si elle travaille comme यदि ça, उहाँले त्यसरी काम गर्नुभयो त्यो नयाँ मण्डलीमा ça ne nous donne aucune excuse यसले हामीलाई कुनै पनि बहाना दिँदैन de travailler. काम गर्नलाई आमेन Donc vos repas यसै कारण तपाईँले पठाएको खाना ont beaucoup aidé. धेरै हामीलाई मद्दत गर्यो Merci encore. धेरै धन्यवाद तपाईँलाई फेरि पनि Si on est grand comme on est aujourd'hui, यदि हामी ठुलो छौँ आज c'est parce que vous avez pourvu. किनभने तपाईँले हाम्रो लागि खाना Et बनाएको nous sommes छ très reconnaissants. र त्यसमा हामी धेरै धन्यवादी Est-ce छौँ qu'on peut battre encore? ताली बजाउनु परमेश्वरको लागि। Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Donc il ne nous reste pas beaucoup de choses à faire. अब चाहिँ नयाँ मण्डलीमा धेरै काम छैन गर्नको लागि Il manque juste la peinture. अब त्यो त्यहाँनिर पेन्टिङ गर्न मात्रै बाँकी छ Et en ce moment même, अहिले पनि la personne qui est en train de tirer les joints मान्छेहरूले त्यहाँनिर जोइन्ट est en train de travailler en ce moment. अहिले पनि मान्छेहरूले काम गरिरहेको Donc छ pour tous ceux-là qui veulent aller visiter यसै कारण जतिजना घुम्न जान चाहनुहुन्छ après le service, सेवा सकिएर हामी अलिकति हेर्न जानेछौँ et on va prier rapidement. र हामी त्यहाँनिर छिटो प्रार्थना पनि C'est गर्नेछौँ important de voir ton église grandir. धेरै महत्त्वपूर्ण हो आफ्नो मण्डली बढ्दै गएको देख्न आमेन Ça te donne un sentiment d'appartenance. त्यसले तपाईँलाई एउटा महसुस दिन्छ यो मेरै मण्डली हो भनेर Tu as participé. तपाईँले त्यसमा भागीदार बनिनुभयो Amen. आमेन Tu n'es plus hors de ce royaume. तपाईँ त्यो राज्यको बाहिर हुनुहुन्न Tu es maintenant un homme de la maison. तर तपाईँ त्यो घरको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ Et peu importe ce que tu apportes, जेसुकै तपाईँ त्यो ठाउँमा ça a son ल्याउनुहुन्छ importance.
त्यो महत्त्वपूर्ण हो Parce que tu es important किनभने तपाईँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ dans le royaume des cieux. स्वर्गीयको राज्यमा Amen. आमेन Alléluia. Donc venez nombreux pour tous les यसै autres. कारण आउनुहोस् Nous avons la हेर्नुहोस् peinture à faire. हाम्रोमा पेन्टिङहरू गर्नु छ रङ लगाउनु छ Nous भित्रतिर avons du nettoyage encore. अनि अलिकति सफा गर्नुपर्ने पनि छ Nous avons besoin de votre support encore. तपाईँहरूको मद्दत अझै चाहिएको छ Pour ceux qui ont des milliers de dollars dans la banque, जतिजनाको करोडौँ रुपियाँ छ तपाईँको ब्याङ्कमा vous pouvez verser aussi. तपाईँ खनाउन सक्नुहुन्छ आमेन Parce qu'on va vraiment meubler ce lieu. किनभने हामी त्यो ठाउँलाई साँच्चै नयाँ बनाउन Il y a चाहन्छौँ des chaises à acheter, चियरहरू किन्नु छ il y a des lavabos. त्यहाँनिर धन्दा गर्ने ठाउँ आमेन। बाँकी छ Il n'y a pas plus beau que la maison de Dieu. परमेश्वरको घरभन्दा राम्रो अरू काहीँ ठाउँ Il n'y a pas un plus beau investissement que tu peux faire si ce n'est la maison de Dieu. तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ पैसा लगाउन सक्नुहुन्न मण्डली जस्तो राम्रो Parce que ठाउँमा toutes बाहेक। ces choses sont appelées à faire. किनभने सबै कुरा एक दिन पग्लेर जान्छ Mais seule l'Église va तर demeurer. मण्डली मात्रै रहिरहन्छ Alors si tu investis dans त्यसै l'Église, कारण यदि तपाईँ मण्डलीमा पैसा लगाउनुहुन्छ parce que tu es en train de te garder un trésor dans les cieux. जान्नुहोस् कि तपाईँले स्वर्गीयमा धन सम्पत्ति थुपार्दै हुनुहुन्छ Amen. आमेन। Donc n'hésitez pas. यसै कारण तपाईँहरू Donner. नमान्नुहोस् परमेश्वरलाई दिनका लागि Mets tous tes œufs dans un panier. तपाईँको सबै पैसा एउटा भेटमा हाल्नुहोस् Viens avec assurance devant le trône de र la grâce. भरोसासँग आउनुहोस् परमेश्वरको अगाडि र भन्नुहोस् परमेश्वर यो Tout दिन्छु ce que j'ai, जे मेरोमा छ c'est pour toi. तपाईँको लागि हो Amen. आमेन। Alléluia. Donc nous allons avoir notre fraternité Mais c'est tous grave. les jeudis. हरेक बिहिबार हाम्रो सेवा हुनेछ Et on va rentrer, je crois bien, le 30 décembre. अनि मलाई लाग्छ अर्को हप्ता नयाँ मण्डलीमा सेवा हुनेछ On veut vraiment avoir अर्को notre हप्तामा premier दुई jeudi. हप्तामा 30 डिसेम्बरमा हाम्रो पहिलो दिन त्यहाँनिर सेवा Parce हुन्छ qu'on veut mettre terme à notre année ici. र हामी यो वर्ष यो मण्डलीमा खतम गर्न Donc चाहन्छौँ nous allons avoir plus d'informations, on va essayer d'organiser quelque chose केही कुरा बनाउने कोसिस गर्नेछौँ हेर्नेछौँ कसरी गरेर On veut aller au nouveau départ. हामी नयाँ ठाउँमा जान चाहन्छौँ C'est Ryan qui joue à la batterie. चाहिँ रायले ग्राउन्डहरू केही पनि Alléluia. Il est prêt. Bientôt on va l'embaucher. चाँडै उसले ड्रम बजाउने छ Il va रायले batteur. किनभने ऊ ड्रम बजाउन मन पराउँछ Alléluia. हालेलुया। Merci Seigneur. धन्यवाद। Donc on va organiser quelque chose, on va vous tenir au courant हामी d'ici त्यो नयाँ dimanche मण्डलीको prochain. लागि केही तयार पार्नेछौँ र अर्को हप्ता म तपाईँलाई अझै जानकारी On दिनेछु va essayer de passer du temps ensemble. र हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा नयाँ मण्डलीमा समय बिताउनेछौँ Amen. आमेन। Gloire au nom de Jésus. परमेश्वरको महिमा होस् Et disent gloire au nom de Jésus. कसैले भन्नुहोस् परमेश्वरको महिमा होस् Permettons comment il m'avance. Gloire au nom de Jésus. Merci Jésus. हालेलुया। Donc nous allons passer dans la parole du Seigneur. हामी परमेश्वरको वचन हेरेर Qui est जानेछौँ। content d'écouter la को parole du खुसी Seigneur? हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचन सुन्न Alléluia. हालेलुया। Si tu es content, यदि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ toi debout. उठ्नुहोस् Et on va prier. र Amen. हामी एकसाथ वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ La हालेलुया। bonne parole du Seigneur. परमेश्वरको असल वचन Que ce soit amer ou salé, यो चर्को होस् या अमिलो होस् ça nourrit pareil. Amen. मिठो होस् जे छिटो होस् यसले हामीलाई खुवाउँछ Dis à ton voisin, j'espère que ça va être sucré aujourd'hui. छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् मलाई लाग्छ आज गुलियो हुन्छ Amen. आमेन Avec du sucre, je vous dis. आज चाहिँ चिनी हुन्छ चिनी Mais le sucre peut être aussi salé. Amen. चिनी पनि धेरै खायो भने तितो हुन्छ Tout dépend de la langue. तर हर वर्ष तपाईँको कस्तो जिब्रो छ Amen. आमेन Mais tout ce que Dieu fait est bon. जे Amen. पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ त्यो La असल छ parole est là आमेन pour corriger. र वचन छ तपाईँलाई सोच्याउन सिकाउन Amen. Amen. Pour redresser पर्खिदिन toute personne. सबैजनालाई Et on est content pour र ça. हामी यो खुसी छौँ यसको लागि Alléluia. Si Alléluia. le frère Léo peut prier. हालेलुया आउनुहोस् हामी एकसाथ मिलेर वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ बेहुकी साथ धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय बुवा म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु मुख्य भएर वचनमा आएका छौँ प्रभु यीशु तपाईँले यो वचनलाई आफ्नै तरिकाले हामीमा बाँड्नुहोस् आफ्नो छोराबाट भएर बोल्नुहोस् परम प्रभु हाँसोको पात्र होइन तर गवाईको पात्र बनिन सकोस् यो वचन तपाईँको हामी बुझ्न सक्दैनौँ आत्मिक रूपमा परम प्रभु तपाईँले आफ्नो छोराबाट भएर हामीमा बोल्नुहोस् कि हामी यसलाई बुझ्न सकौँ एक कामले सुनेर अर्को कामले फ्याल्दैन तर आफ्नो हृदयमा राखौँ अरूसँग बाँड्न सकौँ प्रभु यीशु तपाईँको वचन दुईजना तर्नु यसले काट्छ अनि छाड्छ परमेश्वर काटी छाटी मलाई असल फल दिने रूप बनाउनुहोस् परम प्रभु हालेलुया हालेलुया पाला तपाईँको हालेलुया
Par à travers nous, l'Éternel, que nous puissions garder ce parole dans nos cœurs et partager avec nos frères. Alléluia. परंतु यो वचनलाई आशिष गर्न सक्ने मान्छ आशिष यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन त्यो nom de Jésus. Alléluia. Donc nous allons lire un seul passage. हामी एउटै मात्रै पद पढ्ने छौँ. Alléluia. On va aller dans le livre de Romains, हामी रोमीको पुस्तकमा जानेछौँ. chapitre 9, रोमी 9 मा verset 24 jusqu'au 9:24 देखि 26 सम्म. Romains 9, 24. Donc, la parole de Dieu dit ceci. Ainsi, nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. हामी यहाँ लेखेको छ अर्थात् हामी जसलाई यहुदीहरूबाट मात्र होइन तर अन्य जातिहरूबाट पनि उहाँले बोलाउनु भएको छ भने के भने त जसले कोसेको पुस्तकमा पनि उहाँ भन्नुहुन्छ जनहरू मेरो मानिसहरू थिएनन् तिनीहरूलाई म मेरो प्रजा तुल्याउनेछु र जसलाई मैले प्रेम गरेको थिइनँ त्यसलाई म मेरो प्रिय भन्नेछु अनि जाऊ तिमीहरू मेरो प्रजा होइनौ भनी तिमीहरूलाई भनेको थिए त्यहाँ तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सन्तान कहलाइनेछन्. Donc, vous pouvez vous asseoir. तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ. Il y a ton voisin. छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस्, Voisin, साथी écoute la parole de Dieu. परमेश्वरको वचन सुन्नु Ne me dérange pas. र मलाई बाधा नगर्नु. Amen. आमेन. Il y a ton, si tu vois ton voisin यदि छेउको मान्छेले हेर्दा avec un हुनुहुन्छ téléphone, टेलिफोन खेलाइरहेको देख्नुभयो भने dis le Seigneur te voit. भन्नुहोस् कि परमेश्वरले हेरिरहनु भएको छ. आमेन. Le Seigneur n'aime pas ça. परमेश्वरलाई त्यो मन पर्दैन. Gloire au nom de Jésus. हालेलुया. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'église. आज हामी मण्डलीको बारेमा बोल्नेछौँ. Et quelqu'un dise l'église. कसैले भन्नुहोस् मण्डली. Mandali. मण्डली l'église. Amen. आमेन. Et donc aujourd'hui nous allons parler de Mandali. आज हामी बोल्नेछौँ l'église. Amen. आमेन. C'est quoi l'église? मण्डली के हो? Mandali que हो? C'est Est-ce quoi que quelqu'un l'église? peut me répondre? के कसैले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? मण्डली के हो? C'est quoi l'église? मण्डली के हो? कसैले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? कसैले प्रश्न réellement? सोध्नु भएको छ साँच्चीकै? Mandali que हो? C'est quoi l'église? Amen. आमेन. Dis-le. विदादे मण्डली के हो? Mandali que हो? आमेन. Dis-le. C'est quoi l'église? Hein? Un lieu où on adore Dieu. Ok. एउटा ठाउँ जहाँ हामी Quelqu'un परमेश्वरको d'autre? प्रशंसा गर्छौँ. Gloire. अरू कोही? C'est quoi l'église? Mandali que हो? C'est quoi l'église? Là où plusieurs personnes se rassemblent धेरै मान्छे भेला हुन्छन् pour adorer Dieu. परमेश्वरको महिमा गर्नलाई. Amen. Maman Thérèse, Mandali que हो? Le corps du Christ. ख्रिस्टको शरीर हो. Alléluia. Frère Déo, Mandali que हो? भाइ दियो मण्डली के हो? C'est quoi l'église? L'église c'est moi-même. Alléluia. L'église, c'est toi-même. म आफै हुँ मण्डली. Amen. आमेन. Toutes ces réponses sont bonnes. सबै यी उत्तरहरू सही छन्. Mais nous allons aller dans la définition de l'église. मण्डलीको अर्थ के हो त्यो यसलाई हेर्नेछौँ. Donc, dans la Bible, बाइबलमा le mot église मण्डली est trouvé dans 111 versets. 111 वटा पदमा भेटिएको छ. 111 versets nous parlent de l'église. 111 वटा पदले मण्डलीको बारेमा कुरा गर्छ. L'église veut dire en grec, मण्डलीले भन्नु खोजेको ग्रिकमा ecclesia. एक्लेसिया. Amen. आमेन. Ecclesia signifie en grec l'église, ce qui devient une combinaison de deux mots distincts. यो चाहिँ दुईटा शब्दमा बाँडिएको छ. Ek, एक ecclesia. एक्लेसिया. Ecclesia
Ça veut dire quoi? एक्लेसियाले भन्नुपर्छ के हो? Ecclésia veut dire assemblée. यो भनेको एउटा भिड, Amen. Amen. Un groupe. एउटा ग्रुप, Ek एक veut dire भन्नुपर्छको appelé hors. बोलाइएको मान्छे, Amen. बोलाइएको, Être appelé hors. बोलाइएको C'est un groupe de personnes appelées. भन्नुपर्छको एउटा मान्छेको ग्रुप जसलाई चाहिँ बोलाइएको छ। Pour mieux illustrer l'église, यो मण्डलीले राम्ररी जान्नलाई Pierre le dit de cette manière. पत्रुसले यसरी भन्छ, 1 Pierre au chapitre 2 verset 9. पहिलो पत्रुस 2:9 ले यसो भन्दछ, Vous, तिमीहरू au contraire, vous êtes une race élue, चुनिएको जाति, un sacerdoce royal, राजकीय पुजारीगिरी, une nation sainte. एउटा पवित्र जाति। Que quelqu'un dise, je suis une nation sainte. कसैले भन्नुहोस् म पवित्र जाति हुँ। Mon pवित्र जाति हूँ. Je suis une nation sainte। Amen. Un peuple acquis. एउटा भिन्दै जाति। भिन्दै जाति. Amen. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé उनीहरूले बोलाएको मान्छेले देखाउनको लागि des ténèbres अन्धकार à son admirable lumière. अनि त्यो उज्यालोमा लानलाई L'église मण्डली est un sacerdoce royal. भनेको राजकीय पुजारीगिरी हुन्। Le sacerdoce, c'est le travail qu'on fait pour Dieu. त्यो चाहिँ भनेको हामी परमेश्वरको लागि काम गर्छौँ Et être appelé par Dieu, र परमेश्वरबाट हामी बोलाएका हौँ। c'est sortir du monde भन्नु खोजेको संसारबाट निस्किएका et हौँ, pour servir Dieu. निस्किएर परमेश्वरको लागि काम गर्नु C'est हो। ça l'église. त्यो चाहिँ मण्डली हो। Nous sommes le corps du Christ. हामी ख्रीष्टको शरीर हौँ। Amen. आमेन। Être saint, पवित्र हुनु une भनेको nation sainte. एउटा पवित्र जाति, Être saint, c'est être mis à part. पवित्र हुनु भनेको अरू मान्छेहरूभन्दा भिन्दै हुनु Être हो। consacré एउटा केही कुरामा लागिरहनु हो, au service de Dieu. परमेश्वरको काममा। Amen. आमेन। Nous sommes alors un groupe séparé. हामी एउटा ग्रुप हौँ जुन चाहिँ छुट्टिएका छौँ, Un groupe qui est à part. एउटा ग्रुप जुन चाहिँ अरूभन्दा भिन्दै। Amen. आमेन। L'église, मण्डली ce n'est pas seulement त्यो मात्र होइन, un endroit एउटा ठाउँ où on va chanter, जहाँ हामी गाउँछौँ, danser. नाच्छौँ। Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on va danser et chanter. किनभने धेरैवटा ठाउँमा जहाँ मान्छेले गाउँछन् न त वा नाच्छन्। Amen. आमेन। Tu peux aller dans une boîte de nuit. तपाईँ एउटा रातिको नाइट क्लबमा जानुहोस्, Night club, dans un endroit où tu vas aller danser तपाईँ त्यहाँ मान्छे नाच्छन् et tu vas chanter. र गाउनुहुन्छ। C'est un groupe aussi. त्यहाँ एउटा ग्रुप नै छन्। Amen. आमेन। Tu peux avoir un groupe de soccer. तपाईँ एउटा ग्रुपको एउटा सकरको ग्रुप पनि पाउन Vous सक्नुहुन्छ। allez avoir une j'ai perdu mes mots. Vous allez avoir une activité ensemble. तपाईँहरू केही खेल्नुहुन्छ। Amen. आमेन। Autour d'un ballon. एउटा गोलको वरिपरि Amen. Amen. Taper le ballon. गोललाई हिर्काउने Ou bien le hockey. वा हकी, Le rugby. रुग्बी, Le baseball. बेसबल, On court après la balle. एउटा गोल पछाडि कुद्ने। Amen. आमेन। On court après le ballon. एउटा गोल पछाडि कुद्नु पर्ने। On colle la tête des gens. मान्छेहरूको टाउकोमा हिर्काउने यसरी। Amen. आमेन। Même si ça fait mal. यदि त्यो दुखे पनि On fait comme si on n'avait pas mal. हामी यसो गर्छौँ जसरी टाउकोमा केही दुखेको छैन। Amen. आमेन। Mais l'église, तर मण्डली, que quelqu'un dise Mandali. कसैले भन्नुहोस् l'église, L'église, मण्डली c'est le royaume de Dieu. स्वर्गको राज्य हो। C'est l'épouse du Seigneur. परमेश्वरको दुला। Amen. आमेन। Il dit ça, c'est ma femme. उहाँ भन्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो पत्नी हो। Il y a beaucoup de femmes dehors. बाहिर धेरै पत्नीहरू छन्। Il y a beaucoup de groupes dehors. धेरै ग्रुप छन् बाहिर। Mais ça, c'est ma femme. तर उहाँ भन्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो Amen. पत्नी हो। Est-ce que tu es content d'être l'épouse खुसी du हुनुहुन्छ Christ? परमेश्वरको पत्नी हुन पाउँदा? Amen. आमेन। Jésus, c'est le millionnaire des millionnaires. येशू भनेको मिलियनरको पनि मिलियनर हो। C'est lui qui détient toutes choses sur la terre. जसले सबै कुरा दिनुहुन्छ संसारमा, Et lui appartenir. उहाँको हो। Ça veut dire que tu as toutes ces choses. उहाँको बनिनु भनेको उहाँको जे छ त्यो सबै मेरो हो। Dis à ton voisin, छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस्, tu es dans quelque chose de grand. तपाईँ केही ठुलो कुरामा हुनुहुन्छ। Tu es dans quelque chose तपाईँ de केही grand. कुरा ठुलोमा हुनुहुन्छ। Qui est plus grand que la terre यो entière. चाहिँ संसारभन्दा ठुलो छ। Parce que ton papa, किनभने तपाईँको पिता c'est lui qui possède cette terre. यो संसार उहाँकै हो Et c'est lui qui est la tête de र l'église. उहाँ चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। Donc si tu veux dire à ton voisin, तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो साथीलाई c'est quoi l'église? मण्डली के हो? Mandali Keo. म्युनिसिपल इग्लिज। L'église, c'est la maison de Dieu. मण्डली परमेश्वरको घर हो। Amen. आमेन। Didi Rupa. दिदी Didi रुपा, Léon. कहाँ जानुभयो? Elle a fait. Ok. Didi Ruby. दिदी रुबी, Je confonds toujours Didi Ruby.
Le Seigneur va me dire Amen. Amen. Quand je vois Didi Ruby, जब रुबीलाई देख्छु le repas sort. रुपा निस्किन्छ Je ne sais pas pourquoi. मलाई थाहा छैन किन Amen. Amen. Donc, Didi Ruby, रुबी l'église, मण्डली c'est trop grand. ठुलो छ Amen. Amen. C'est trop merveilleux. अति ठुलो छ Dans le royaume des cieux, स्वर्गको राज्यमा c'est la joie, आनन्द c'est la paix शान्ति dans le Saint-Esprit. पवित्र आत्मामा Est-ce que tu as la joie au के travail? तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ काममा Tu n'es pas fatigué d'aller travailler. तपाईँ के गर्नुभएको छैन काममा जाँदा Amen. आमेन Tu es comme, ah, lundi encore. तपाईँ भन्नुहुन्छ ए फेरि पनि सोमबार Ouais, ए हो encore une autre journée. अर्को दिन फेरि पनि Tu comptes les heures. तपाईँ घन्टा गर्नुहुन्छ J'espère que ce n'est pas comme ça dans la maison मलाई de लाग्छ Dieu. तपाईँ परमेश्वरको घरमा घन्टा Amen. गर्नुहुन्न Dans la maison de Dieu, on ne te demande pas. Tu dois. तपाईँले यो Amen. आमेन Mais des fois, il faut ça. कोही बेला यस्तो चाहिन्छ पनि Amen. आमेन Il ne faut pas seulement venir dans la maison de Dieu comme ça. जहिले पनि परमेश्वर घरमा यतिकै आउनु हुँदैन Vous êtes une race. तपाईँहरू एउटा जातले हुनुहुन्छ Une race. एउटा जात C'est une espèce qui est différente de toutes les autres अरू espèces. मान्छेहरूभन्दा भिन्दै Vous n'êtes pas pareil. तपाईहरू अरू मान्छे जस्तो Vous êtes हुनुहुन्न différent. तपाईहरू भिन्दै हुनुहुन्छ Amen. आमेन Dis à ton voisin, अरू मान्छेलाई tu es भन्नुहोस् une race तपाईँ différente. भिन्दै मान्छे हुनुहुन्छ Amen. आमेन Tu es la race de Dieu. तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ Ça veut dire que tu portes le diadème de Dieu. भन्नुभएको परमेश्वरको चिन्ह लिनुहुन्छ तपाईँ Vous êtes une race élue. तपाईहरू चुनिएका जाति Amen. Amen. Une nation sainte. एउटा पवित्र जाति Alléluia. Alléluia. La nation du Seigneur एउटा Jésus. प्रभु येशूको जाति Un peuple acquis. एउटा जाति जो चाहिँ भिन्दै छ La parole de Dieu nous dit nous sommes un peuple acquis. परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी एउटा भिन्दै जाति हौ À quel prix एउटा मूल तिरेर छुटाएको Dieu a acquis son कत्रो peuple. मूल्य तिरेर परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई छुटाउनु भयो Amen. आमेन Être acquis, एउटा कसैको बनिनु ça veut dire être acheté de quelque भन्नु chose. खोजेको कसैले मूल्य तिरेर किनेको हो Amen. आमेन Quand quelqu'un dit tu m'appartiens, जब कसैले भन्छन् तिमी चाहिँ मेरो हो ça veut dire que भन्नु खोजेको avant tu n'étais pas à moi. अगाडि तँ मेरो थिइन J'étais à quelqu'un d'autre. कसै अरूको थिइस् C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit यसै en कारण Romains. परमेश्वरको वचन भन्छ रोमीमा Dieu nous a appelés non seulement d'entre les Juifs. परमेश्वरले यहुदीहरू मध्येबाट Mais मात्र dans राख्नु les भयो, païens. तर पाखण्डीहरूबाट Dieu est allé dans le peuple païen त्यो पाखण्डीहरूमा जानु et il est भयो venu nous र chercher. हामीलाई लिनुभयो Amen. आमेन La parole de Dieu dit dans Osée, परमेश्वर वचन भन्छ होसेको Osée, होसे va, जा prends une prostituée, एउटा बेश्या औरतलाई épouse cette femme र त्यो बेश्या औरतलाई et बिदा donne-lui des enfants. र त्योबाट बच्चा जन्मा Parce que les prostituées, किनभने बेश्या औरत c'est à travers de l'argent. Amen. पैसा बनाउँछ C'est seulement l'argent. पैसा हो उनीहरूको C'est लागि seulement le plaisir. उनीहरू मजा Il a dit, va épouser une prostituée. परमेश्वरले भन्नुभयो गएर एउटा Est-ce que Dieu बेश्या vous a déjà औरतलाई envoyé dans une mission bizarre? बेश्या औरतलाई बेकार के परमेश्वरले तपाईँलाई यो भन्नुभएको छ Amen. आमेन Moi, si j'étais le prophète Osée, यदि परमेश्वरले कसैलाई यसो भने Hey, Seigneur. होसे हुनुभए je ne sais pas si j'entends bien de toi, म mais भन्थेँ होला प्रभु मलाई थाहा छैन यदि म राम्ररी सुन्दैछु ton affaire là, तपाईँको काम नि c'est fort. गाह्रो छ Prostituée. एउटा बेश्या औरत Ouais, Seigneur. हो परमेश्वर Il dit à, je crois, Zacharie, उहाँले मलाई लाग्छ जकरियालाई भन्नुभयो prépare-toi du pain avec la nourriture, les sacrements humains, अनि उहाँले भन्नुभयो les excréments humains. उहाँले भन्नुभयो मान्छेको टोइलेट लगाएर खानेकुरा बना Il dit, waouh, Seigneur, उसले भने ए परमेश्वर c'est quoi cette affaire? यो के भनेको मलाई Dieu dit encore à Abraham, परमेश्वरले आब्रामलाई भन्नुभयो Abraham, अब्राहम sacrifie ton fils. तेरो छोरालाई मार Il dit, tu m'as donné un, परमेश्वर उसले भने तपाईँले मलाई एउटै मात्रै दिनुभयो celui que tu veux. अनि त्यसलाई मार भन्नुहुन्छ Seigneur, Dieu fait toutes les choses étranges. परमेश्वरले जहिले पनि छक्क लाग्दो कुरामा माग्नुहुन्छ Amen. आमेन। Mais il le fait pour nous montrer तर उहाँले हामीलाई combien de fois il nous aime. देखाउनका लागि गर्नुहुन्छ उहाँले Il le fait pour nous montrer. उहाँले हामीलाई देखाउनुहुन्छ Qu'il est venu mourir pour nous. उहाँ हाम्रो लागि आएर क्रुसमा मर्नुभयो C'est ça त्यो que Dieu a fait. चाहिँ गर्नुभयो Nous étions परमेश्वरले। des enfants de हामी एउटा prostitution. सानो बच्चा थियौँ एउटा बेश्या Amen. औरतको Nous étions des enfants du péché. हामी पापको बच्चा थियौँ Mais Dieu, dans son तर amour, परमेश्वर आफ्नो प्रेममा il a dit, je ne l'appelle plus de telle manière. उहाँले भन्नुभयो म यसलाई Toi qui n'étais pas mon peuple, तँ जो मेरो जाति tu थिइनस्, deviens mon peuple. अबदेखि तँ मेरो Toi जाति qui n'étais बनिन्छस्। pas digne, तँ योग्यको tu थिइनस्,
tu deviens digne. Toi qui es né dans le péché, laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il ne te regarde pas comme tu te regardes. Mais il te regarde avec amour. Et c'est à ça le prix qu'il a payé pour toi. La parole de Dieu a tant aimé le monde. C'est sacrifié pour lui. Amen. Dit Dieu a payé ton prix. Amen. À qui appartient l'Église? L'Église appartient à Jésus. Amen. Et Jésus a acheté son Église. Il n'a pas acheté son Église avec de l'argent. Il n'a pas dit $2, $2. Juste ça. Non. Dieu a acheté son Église avec son sang. Avec son sang. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous lave. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. Alors laisse-moi te dire, dis à ton voisin, si tu es opprimé, si tu es dans une situation, invoque le sang de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, viens me délivrer. Parce que tu m'as acheté dans ton sang. Tu as versé ton sang à la croix pour moi. Restaure-moi. Renouvelle-moi. Ramène-moi à toi. Seigneur Jésus, nous appartenons au Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi venir voler tes enfants. Plaide le sang de Jésus sur eux. Dans la prière, réclame-les dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Yisukonama? Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je réclame ma vie au nom de Jésus. Je réclame ma famille au nom de Jésus. Je réclame ma bénédiction au nom de Jésus. Je réclame mon âme au nom de Jésus. Je réclame mes pensées au nom de Jésus. Je réclame le succès au nom de Jésus. Je réclame la vie au nom de Jésus. Vous avez le pouvoir. Parce que le Seigneur ne vous a pas racheté avec de l'argent, mais il vous a racheté avec un grand prix et son sang. Amen. Le sang, c'est ce qui te donne la vie. Si tu n'as pas de sang, tu ne vis pas. C'est dans le sang que se retrouve ton âme. Amen. Merci Ryan. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour Ryan? Alléluia. Il faut apprendre les enfants à donner. Amen. Parce que quand tu seras grand, ils vont donner à Dieu. Amen. Ryan. Que le Seigneur te bénisse. Abondamment. Alléluia. Donc, quelqu'un dit le sang de Jésus. Ça, c'était un bonus. L'église appartient au Seigneur Jésus. C'est son idée. Il a tant aimé ce monde. Il a dit qu'il va sauver ses enfants. Amen. Il est allé à la croix pour toi. Parce qu'il a vu en toi quelque chose d'éternel. Il a dit je ne veux pas donner de l'or. Parce que dans mon royaume, je marche sur l'or ici. Amen. Il a dit je ne veux pas donner quelqu'un d'autre. Mais je veux me donner moi-même. Amen. C'est juste pour te montrer que notre Seigneur il t'aime à tel point qu'il se donne lui-même. Il a porté nos péchés. Il a porté nos fardeaux. Quel Dieu magnifique. Quel Dieu merveilleux. Il a laissé sa gloire. Il a dit je vais descendre. Et je vais mourir. Amen. Tu vaux grand. Gloire. Tu vaux grand.
मूल्यको छौ Tu n'es pas n'importe qui. जोसुकै होइन तिमी Amen. आमेन Tu es une créature merveilleuse. तिमीहरूको परमेश्वरको आँखा अगाडि बहुमूल्य कुरा Dieu हुन्छ ne meurt pas pour les anges, परमेश्वर स्वर्गदूतको लागि मर्नु भएन mais Dieu est mort pour ses enfants. तर आफ्नो छोराछोरी तपाईँ र मेरो लागि Dieu est vraiment mort. साँच्चै मर्नु भयो परमेश्वर On a dit celui qui est mort हामी भनिएको छ जो मरेको छ et qui revient, il est ressuscité. जो आउनु भयो Pour être ressuscité, tu भएको dois छ mourir. तपाईँ पनि बौरी उठ्नको लागि पहिला मर्नुपर्छ Amen. आमेन Est-ce que quelqu'un veut के ressusciter? कोही बौरी उठ्न चाहनुहुन्छ Qui veut को ressusciter? बौरी उठ्न चाहनुहुन्छ Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un couteau ici? एउटा खुकुरी छ Amen. आमेन Si tu veux voir la résurrection, यदि तपाईँ बौरी उठेको हेर्न चाहनुहुन्छ Amen. आमेन Ça prend que le sang coule. पहिला रगत बग्नुपर्छ C'est ce que le Seigneur a fait. अनि परमेश्वरले त्यही गर्नुभयो तपाईँको लागि आमेन Parce qu'il voulait être. किनभने उहाँ तपाईँसँग हुन चाहनुभयो Alléluia. हालेलुया L'église appartient à Dieu. मण्डली प्रभुको हो Dis à ton voisin, छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् j'appartiens à Dieu. म प्रभुको हुँ Mon Prabhu Kohou. j'appartiens à Dieu Alléluia. Il dit, son trône de gloire, il a abandonné. उहाँको महिमाको राज्यलाई छोड्नुभयो Il s'est humilié et a refusé de jouir de l'éternité sans commencer. उहाँ निहुरिनु भएर ओछिनु भयो अरूको सामने Il a dit, je me dépouille de moi-même उहाँले भन्नुभयो म आफूलाई ओछ्याउँछु et je vais être comme mes brebis. र मेरो भेडाहरू जस्तो बनिन्छु Je veux sentir leur odeur. म उनीहरूको बासनालाई सुन्न Je चाहन्छु veux ressentir ce qu'ils म ressentent. उनीहरूले जे अनुभव गर्छन् त्यो अनुभव गर्न चाहन्छु Alors le Seigneur a revêtu de la chair. त्यसै कारण परमेश्वरले शरीरलाई पहिरिनु Il a भयो été manifesté dans cette chair. उहाँ त्यो शरीरमा Et आउनुभयो il a marché sur cette terre र यो संसारमा हिँड्नुभयो parce qu'il voulait être semblable. किन उहाँले चाहनुभयो तपाईँ जस्तो हुनका लागि आमेन Quel amour. कत्रो ठुलो प्रेम Mais dis encore à ton voisin, आफ्नो छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् l'église. मण्डली मण्डली L'église, c'est quelque chose de grand. मण्डली केही ठुलो कुरा हो Dis à ton voisin, il va quelque part. छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् ऊ कतै जाँदैछन् Laisse-moi te ऊ dire, कतै जाँदैछन् il n'y a pas plus merveilleux. मलाई भन्न दिनुहोस् कि मण्डलीभन्दा राम्रो अरू कुरै Il n'y a pas plus beau que l'église. मण्डलीभन्दा राम्रो देखिने अरू केही छैन Le Seigneur prend les imparfaits परमेश्वरले नराम्रो मान्छेलाई लिनुहुन्छ et les amène ensuite. र मण्डलीमा ल्याउनुहुन्छ Le Seigneur ne regarde à personne. परमेश्वरले कसैलाई हेर्नुहुन्न Dans l'église, मण्डलीमा tu ne passes pas d'examen. तपाईँ कुनै इक्जाम गर्नु पर्दैन Tu viens tel que tu es. तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै आउनुपर्छ Amen. आमेन Dans l'église, मण्डली tu n'apportes pas ton CV. मा तपाईँले आफ्नो सिभी ल्याउनु पर्दैन Amen. आमेन Dieu ne fait exception de परमेश्वरले personne. कसैलाई पनि La porte de l'église est ouverte pour हुन्न। toi. परमेश्वरको मण्डलीको ढोका सबैको लागि Le sang de Jésus-Christ est disponible pour tout le monde. यीशुको रगत सबैको लागि आज पनि छ Le Saint-Esprit est disponible pour tout le पवित्र monde. आत्मा सबैको लागि छ Il dit celui qui a soif, उहाँ भन्नुहुन्छ जो तिर्खाएको celui qui छ a faim, जो भोकाएको छ qu'il vienne acheter आओस् किनो sans argent. पैसा बिना Celui qui a soif, जो तिर्खाउँछ qu'il vienne boire त्यो आओस् aux दियोस् eaux vives. जिउँदो खोलाको Et पानी ces eaux vives seront tellement abondantes पानी यति साह्रो धेरै qu'elles छ couleront de ton sein. उनीहरूको पेटबाट यो En बग्छ d'autres termes, भन्नु खोजेको Dieu va tellement te remplir परमेश्वरले तपाईँलाई यति पूर्ण पार्नुहुन्छ de son esprit उहाँको आत्माले que tu vas maintenant être une source de multiplication. बढ्ने जाति तपाईँमा आउँछ Tu auras tellement la présence de तपाईँ Dieu परमेश्वरको उपस्थिति que tu vas partager cela aux autres, तपाईँ यो अरूसँग que tu vas contaminer le monde. तपाईँले अरूलाई पनि मन लगाउनुहुन्छ C'est ça l'église. त्यही चाहिँ हो मण्डली Amen. आमेन Dans l'église, tu as la joie. मण्डलीमा आनन्द छ Amen. Amen. Dans l'église, tu ne fais pas de concurrence. मण्डलीमा Tu ne fais pas de comparaison. तपाईँ एकअर्कालाई दाँच्नु पर्दैन Amen. आमेन Autant Dieu nous aime tous, जति परमेश्वरले हामीलाई माया autant गर्नुहुन्छ il t'aime toi seul. त्यति बढी उहाँले तपाईँलाई पनि माया गर्नुहुन्छ Autant Dieu pense à nous tous. जति परमेश्वरले हामी सबैजनालाई Mais laisse-moi सोच्नुहुन्छ te dire que le Seigneur préfère laisser 99 brebis मलाई भनिदिनुहोस् परमेश्वरले 99 भेडालाई छोडेर pour aller sauver une brebis. एउटालाई मात्रै बचाउन पनि जानुहुन्छ Amen. आमेन Laisse-moi te dire que si tu étais seul sur la terre, मलाई भनिदिनुहोस् कि यदि तपाईँ एक्लो भएको भए le यो Seigneur संसारमा allait mourir par lui. परमेश्वर तै पनि आएर तपाईँको लागि मर्नु Il avait le monde entier à sa pensée. उहाँको दिमागमा यो Mais il संसार était avec थियो। toi uniquement. तर तपाईँ चाहिँ विशेष गरी Comme हुनुहुन्छ Moïse dit ceci. जसरी मोसाले भन्छन् Seigneur, si je trouve परमेश्वर grâce, यदि म अनुग्रह पाउँछु तपाईँको आँखा अगाडि montre-moi le chemin. मलाई बाटो देखाउनु Amen. आमेन Tu n'as pas besoin तपाईँलाई चाहिँदैन d'être faux devant le Seigneur. Faux.
तपाईँ झुटो बनेर आउनु पर्दैन Tu as juste besoin d'être toi. तर तपाईँ आफै सही Quand बनिनुहोस् tu viens, जब यहाँ आउनुहुन्छ तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै tu as आउनुहोस् juste besoin d'être toi. तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै आउनुहोस् Lorsque tu viens dans la présence, जब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुहुन्छ tu as juste besoin d'être honnête. तपाईँ नम्र मात्र हुनुपर्छ Lorsque tu viens dans la जब maison, तपाईँ परमेश्वरको घरमा आउनुहुन्छ Amen. आमेन Le Seigneur ne te juge pas. परमेश्वरले तपाईँलाई न्याय Il n'est गर्नुहुन्न pas venu pour juger le परमेश्वर monde, न्याय गर्न आउनु mais भएन il est venu pour sauver. तर बचाउन Il est आउनुभयो venu pour donner la vie, तपाईँलाई जीवन दिन et la vie en को abondance. प्रशस्ति मात्रामा होस् भनेर C'est ça l'église. त्यही चाहिँ हो मण्डली C'est l'église du Dieu vivant. परमेश्वरको मण्डली La parole de Dieu nous dit dans परमेश्वरको l'Hébreu, वचनले भन्छ हिब्रूको au पुस्तकमा chapitre 4, हिब्रू au 4 verset 14. हिब्रू 4 को 14 मा Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, आकाश छलेर जानुभन्दा परमेश्वरको पुत्र येशू हाम्रो आमेन Jésus, le Fils de Dieu, येशू हाम्रो परमेश्वरको पुत्र demeurons fermes dans la foi que nous professons. हाम्रो महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेका थियौँ Amen. आमेन Peuple de Dieu, विश्वासमा थामेर ne vends rien pour ton église. आफ्नो मण्डलीको लागि केही नबेच्नुहोस् Ne vends rien pour l'église. मण्डलीको लागि केही नबेच्नुहोस् Tiens ferme dans la foi. मण्डलीको लागि केही बनिने कोसिस नगर्नुहोस् तर बलियो Garde बन्नुहोस् cette parole comme étant la meilleure nouvelle que tu peux avoir. तपाईँ यो वचनलाई राख्नुहोस् जसरी तपाईँले यस्तो वचन कहिले सुन्नुभएको थिएन Amen. Amen. Nous sommes sauvés हामी बाँचेका par la छौँ grâce de Dieu अनुग्रहबाट au moyen de la foi en Jésus-Christ. विश्वासद्वारा प्रभु येशूमा Si tu es ici, यदि आज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ c'est par sa grâce. पहिलो कुरा किनभने C'est उहाँको une अनुग्रह faveur que tu n'as pas méritée. एउटा अनुग्रह जुन तपाईँ योग्यको हुनुहुन्न Alors garde cette foi en toi यसै कारण यो विश्वास तपाईँ आफैमा avec राख्नुहोस् des actions de grâce. एउटा धन्यवादी भएर Merci Seigneur. धन्यवाद परमेश्वर Merci Seigneur. धन्यवाद Est-ce qu'on परमेश्वर peut battre encore les mains? हामी ताली बजाउन धन्यवाद Merci Jésus. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci pour ton amour envers nous, Papa. Merci de nous avoir appelés à ta justice, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur. Oh, Koroboyo Sakarabaha. Le Seigneur est mort pour nous. परमेश्वर हाम्रो लागि मर्नुभयो Il s'est sacrifié pour son église. आफ्नो मण्डलीको लागि बलिदान हुनुभयो Demeurons fermes dans la foi que nous professons. विश्वासमा अटल रहौँ जुन Car nous छौँ। n'avons pas un souverain किनभने sacrificateur हाम्रो अरू धर्मगुरु छैनन् qui ne puisse compatir à nos faiblesses. जो हाम्रो दुर्बलतामा मद्दत गर्छन् Amen. आमेन। Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, तर त्यसको उल्टा il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. परमेश्वरलाई सबै कुरामा जाँच्यो तर कुनैमा पनि लड्नु भएन Amen. आमेन। Si tu as péché, यदि तपाईँले पाप गर्नुभएको छ confesse tes péchés en Jésus. आफ्नो पाप येशूमा ग्रहण गर्नुहोस् Il est juste et bon उहाँ असल हुनुहुन्छ pour te parler तपाईँलाई क्षमा गर्नका लागि तपाईँलाई शुद्ध de पार्नलाई tout. तपाईँको नराम्रो कुरादेखि Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. हामी मण्डलीमा डराउनु पर्दैन Nous avons juste besoin d'être honnêtes. नम्र हुनुपर्छ À chaque fois que la parole de Dieu sort, जब परमेश्वरको वचन निस्किन्छ reçois-la. पाउनुहोस् Parce qu'elle sera un bon pour toi. किनभने यो तपाईँको प्राणको लागि असल हुन्छ Elle sera une guérison pour tes यो os. तपाईँको हड्डीको लागि चङ्गै गर्ने दबाई बनिन्छ Tu es dans un lieu de तपाईँ bénédiction. एउटा आशिषको ठाउँमा हुनुहुन्छ Tu es assis sur une mine d'or. तपाईँ एउटा सुन उब्जनी हुने ठाउँमा Tu es हुनुहुन्छ assis dans un lieu où tu ne peux que grandir. et एउटा grandir. एउटा ठाउँमा उभिनु भएको छ जहाँ चाहिँ तपाईँ बढ्नुहुन्छ र बढ्नुहुन्छ Parce que c'est dans ce lieu où tu किनभने reçois la यो miséricorde. ठाउँमा चाहिँ तपाईँले अचम्मको अनुग्रह पाउनुहुन्छ Dans mon travail, मेरो काममा on passe des examens. हामी इक्जामहरू गर्छौँ Ça fait 50 ans que tu es là. तपाईँ 50 वर्ष भयो यो Tu ठाउँमा passes भएको toujours des examens तपाईँको pour यो avoir पनि इक्जाम गर्नुपर्छ ta cote salariale. तपाईँको अलिकति तलब बढाउनको लागि Amen. आमेन Si tu faillis à ton examen, यदि तपाईँ आफ्नो इक्जाम फेल गर्नुभयो on t'appelle au bureau. तपाईँलाई अफिसमा बोलाउँछौँ On ouvre les statistiques. हामी हेर्छौँ तपाईँले कसरी काम गर्नुभयो Wow, ici, यहाँनिर tu as trop parlé. तँ धेरै बलि छस् Amen. आमेन Tu n'as pas bien travaillé sur ce dossier. तैँले यसमा त राम्ररी काम गरिनस् Tu es stressé अनि तपाईँ डराउन parce que tu थाल्छ dois fournir les efforts. किनभने अब तपाईँले मजाले काम गर्नुपर्छ Amen. आमेन Mais dans la maison de तर Dieu, परमेश्वरको Dieu घरमा te dit ceci. परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ Viens tel que
que tu es. आइज तँ Si tu जस्तो es fatigué, यदि गरेको छ je te donne de म repos. तँलाई Si tu es malade, यदि बिमारी je छ te guéris. म तँलाई चङ्गाइ Si tu as faim, यदि तँलाई भोक demande et je te donne. र म तँलाई Si tu as soif, यदि खाएको छ viens boire आइज पिउन gratuitement. सित्तैमा Tu n'as pas besoin d'être stressé. तँलाई तुम डर मान्नु पर्दैन Tout ce que Dieu attend de nous, तर परमेश्वरले के पर्खिनुहुन्छ c'est que nous soyons honnêtes. कि हामी नम्र भएको Que जस्तो nous छौँ puissions त्यस्तै voir हामी- Dieu face à कि हामी face. उहाँलाई आफ्नै आँखा अगाडि देख्न सकौँ Amen. आमेन L'église, मण्डली ce n'est pas un lieu des hypocrites. एउटा कपी गर्ने ठाउँ होइन Amen. Amen. Dis à ton voisin, छेउको il n'y मान्छेलाई a pas भन्नुहोस् d'hypocrisie. यहाँनिर कपी हुँदैन Amen. भन्नुहोस् Dieu आमेन ne compte pas le nombre de fois que tu viens dans la maison. परमेश्वरले भन्नुहुन्न कतिचोटि चाहिँ मण्डली आउनुहुन्छ भनेर Amen. आमेन Mais Dieu regarde au cœur. तर परमेश्वरले हृदयलाई हेर्नुहुन्छ Dieu regarde à ton cœur. परमेश्वरले तपाईँको हृदय हेर्नुहुन्छ Tu peux venir dans la maison de तपाईँ Dieu मण्डली आउन सक्नुहुन्छ et ne pas être intéressé. र तपाईँलाई केही मन हुँदैन मण्डली आउने पहिला Mais tu es libre. तर तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ Sache que जान्नुहोस् कि il n'y aura pas de checkbook. कुनै चेकबुक हुँदैन Seigneur, परमेश्वर je suis venu à l'église 150 fois. म मण्डली गएँ 150 चोटि Rappelle-toi, तपाईँले याद गर्नुहोस् dimanche, आइतबार le 16 décembre 2018, डिसेम्बर 16 2018 j'étais là, Seigneur. म मण्डली गएँ Oh oui, j'étais là. ओ प्रभु Oh oui. ए ओ J'ai sauté, म उफ्रिएँ, j'ai dansé, म नाचेँ j'ai chanté. मैले गाएँ Alors, अब moi je rentre au ciel. म चाहिँ स्वर्गीय जानुपर्ने हो Non, त्यो होइन l'église, मण्डली c'est un lieu de भनेको restauration. एउटा ठाउँ जहाँ हामी नयाँ हुन्छौँ C'est le lieu où tu te rapproches de एउटा Dieu. ठाउँ हो जहाँ तपाईँ परमेश्वरको चाहिँ नजिक C'est हुनुहुन्छ dans ce lieu où tu peux यो déverser. ठाउँमा तपाईँ आफ्नो हृदय बिसाउन C'est dans ce सक्नुहुन्छ lieu où tu peux être यो honnête. ठाउँमा जहाँ तपाईँ नम्र बनिन C'est dans ce सक्नुहुन्छ lieu où tu peux parler à Dieu. यो ठाउँ हो जहाँ तपाईँ आफ्नो परमेश्वरसँग बोल्न सक्नुहुन्छ Parce que le Seigneur, en ce jour-là, परमेश्वर यो दिनमा il dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai यो pas दिनमा dit. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मदेखि टाढा भइजाउँ मैले तिमीलाई Ils कहिले étaient देखेको étonnés. छैन। उनीहरू छक्कै परे Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? परमेश्वर के तपाईँको नाममा हामीले यसो गर्यौँ र N'avons-nous pas travaillé? के हामीले काम गर्यौँ न र N'avons-nous pas joué au के piano? हामीले पियानो बजाएनौँ र J'ai pratiqué fort. मैले कति प्र्याक्टिस गरेँ Éloigne-toi de moi. परमेश्वर भन्नुहुन्छ मदेखि टाढा होइजा Parce que je n'étais pas connu. किनभने मैले तँलाई पटक्कै चिनिनँ L'église, मण्डली c'est le lieu où tu apprends à एउटा connaître. ठाउँ हो जहाँ हामी परमेश्वरलाई जान्न सिक्छौँ Amen. आमेन Sa parole est là. उहाँको वचन यहाँ छ pour t'enseigner. तपाईँले सिकाउनलाई L'église, c'est मण्डली une assemblée. एउटा समूह हो Mais laisse-moi te dire मलाई भन्न दिनुहोस् que tu as besoin d'être un avec le Seigneur. तपाईँ एक हुनुपर्छ परमेश्वरसँग Il a dit, उहाँले भन्नुभयो si vous êtes un, यदि si vous gardez mes commandements, यदि तिमीहरू मेरो आज्ञालाई पालन गर्छौ je viendrai à vous म तिमीहरूमा आउँछु et je vais souper avec र तिमीहरूसँग खाना खानेछु Amen. आमेन vous. Dieu veut habiter en toi. परमेश्वर तपाईँमा बास गर्न Dieu चाहनुहुन्छ veut passer du temps. परमेश्वर तपाईँसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ Amen. आमेन Dieu veut que tu sois son temps. परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ उहाँको मन्दिर बनिएको Il veut tellement être proche de toi. परमेश्वर तपाईँको नजिक यति साह्रो नजिक Il हुन te चाहनुहुन्छ sert. उहाँले यसरी तान्नुहुन्छ Quel amour ça, Seigneur. यो प्रेम भनेको यही हो Dieu, il n'y a pas plus amoureux que le Seigneur यति Jésus. ठुलो भन्दा प्रेमी यीशुभन्दा छैन Il n'y a pas plus amoureux. Tu vas habiter avec ton mari तपाईँ ou ta त्योभन्दा femme. प्रेमी छैनन् जब तपाईँ आफ्नो पति वा पत्नीसँग Quand tu बस्नुहुन्छ vas au travail, ta femme n'est pas là. जब तपाईँ काममा जानुहुन्छ तपाईँको बुढी हुँदैन Laisse-moi te dire, le mariage avec Jésus, c'est pour la vie. तर मलाई भन्न दिनुहोस् जब तपाईँ यीशुसँग विवाह गर्नुहुन्छ त्यो सधैँभरिको लागि हो Amen. आमेन। Ça ne va pas là-haut. सधैँभरिको लागि हो Avec Jésus, यीशुसँग c'est pour toujours. सधैँभरिको लागि Dans le cœur, हृदयमा dans tous les jours, प्रत्येक दिन il est là. Il a dit, il est jaloux de उहाँ toi. भन्नुहुन्छ म तँलाई देखेर आरिस C'est du jaloux. हाम्रो परमेश्वर आरिस गर्ने Un परमेश्वर jaloux, हुनुहुन्छ। c'est quelqu'un qui est एउटा qui est आरिस possédé. जो चाहिँ यो मेरै मात्रै Il भन्छ ne veut pas que ça aille chez quelqu'un d'autre. उसले चाहँदैन कि मेरो कोही अरूसँग Il devient c'est un avare. यो चाहिँ मेरो हो भन्ने Amen. Amen. Il veut tout garder pour lui. उहाँले सबै आफ्नै लागि मात्र राख्न C'est चाहनुहुन्छ ça les jaloux. यही चाहिँ हो Il dit, आरिस। tu es la prunelle de son œil. उहाँ भन्नुहुन्छ तँ मेरो आँखाको नानी Ça होस् veut dire qu'à la vitesse lumière, भन्नु खोजेको जति छिटो quand il y a un danger, il est là. जति छिटो Amen. जान्छ त्यति L'œil छिटो
est plus rapide que toutes les caméras qui existent sur la terre. C'est aussi proche que l'Éternel est proche. Vous n'avez pas vu, on lance quelque chose. Aux yeux, l'œil est déjà fermé. C'est aussi de cette manière que Dieu nous guide. C'est de cette manière que Dieu nous garde. C'est de cette manière que Dieu nous aime. C'est de cette manière qu'il pense à nous. C'est de cette manière qu'il est allé à la croix. En allant à la croix, le Seigneur a dit non, ce sont mes enfants. Je ne veux pas les laisser. Je veux mourir pour moi. Je veux donner ma vie pour moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains? Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci pour ton église? Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Alléluia Jésus. C'est pour cela Paul le dit. Qui peut me séparer? Ni les profondeurs, ni la faim, ni la soif, ni la maladie, ni la souffrance ne va me séparer de l'amour de Dieu. Parce que dans la maladie, il est avec moi dans la maladie. Dans la faim, il est avec moi dans la faim. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est ma lumière. Même si je soif, l'Éternel est mon abreuvoir. Même si je meurs, Job dit ceci. Même si je meurs, je lui ferai quand même confiance. Parce que je verrai Dieu face à face. Il n'est pas un Dieu qui est loin, mais il est un Dieu qui est proche. Il est un sacrificateur pour toi. Il a passé dans les endroits où tu passes. Il a dit, il n'y a aucune situation qui va arriver dans ta vie qui n'a été humaine. Dieu a tout péché, il a tout fait. La seule chose qu'il a besoin de toi, c'est que tu te rapproches de lui. Rapproche-toi de lui. Parle à ton mari. Exprime-lui tes sentiments. J'ai appris une chose avec à l'étude biblique. Est-ce que vous savez ceci? La prière ne change rien. Mais c'est Dieu qui change. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il dit ne multipliez pas de vin. Avant que la parole ne sorte de ta bouche, il savait. Alors qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il demande de prier. C'est parce qu'il veut passer le temps avec toi. C'est juste parce qu'il veut s'approcher. C'est pour cela la parole de Dieu dit. Apportez vos situations et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Le Seigneur est le prince de la paix. Ce qu'il veut quand tu es dans sa présence, il veut te donner sa paix. Quand tu pries, il donne la paix avant de te donner la provision. C'est pas la prière qui a changé quelque chose, mais c'est ta présence dans sa présence. Il dit, venez à moi et je m'approcherai. Et dans sa présence, tu as tout ce dont tu as besoin. Ta situation n'a pas encore changé. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel a déjà touché ton cœur. L'Éternel a déjà renversé la situation. C'est pour cela David dit, tu dresses une table. Je vois l'ennemi. Même dans mon cœur, je fais une célébration. Parce que l'Éternel me délivrera. L'Éternel me délivrera. Est-ce que quelqu'un peut juste lever? Alléluia, Seigneur Jésus. Éternel des armées, Papa, permets-nous d'être sincères devant toi, Seigneur. Sonde-nous et connais-nous, Seigneur. Regarde encore, Papa, l'état de nos cœurs. Regarde encore l'état de nos pensées, Seigneur. Ramène-nous seulement à toi, Papa.
Ramène-nous seulement dans ta présence, Seigneur. Permets-nous seulement d'être proches de toi, Papa. Ramène-nous à toi, Seigneur. Baptise-nous, Papa, d'un esprit, Papa, d'humilité. Baptise-nous d'un esprit d'honnêteté, Seigneur. Qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, sonde de moi. Connais-moi, Seigneur. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux sentir ta présence, Seigneur. Papa, dans ta présence, j'ai la paix. Dans ta présence, j'ai la force. Papa, mes situations sont devant toi. Je me mets nu devant toi, Seigneur. Change-moi, oh Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. L'Éternel veut que tu rentres dans sa présence. L'Éternel veut que tu rentres dans sa présence. C'est pour cela et il est. Tu es le désir de son cœur. Tu es le désir de son cœur. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Et il n'a commis aucun péché. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Paul le dit de cette manière dans le livre de Philippiens. Il dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal à Dieu. Philippiens, je crois que c'est chapitre 1. Philippiens 1, 5. Philippiens 2, à partir du verset 5. Lequel existait en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et en paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Amen. Et que
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. यीशुको नाममा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमा भयो यीशु ख्रिस्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। Amen. Ça, c'est ce que notre Dieu a fait. यो चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लागि गर्नुभयो। Lui qui est Dieu, जो उहाँ आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो il est descendu sur la terre. उहाँ संसारमा आउनुभयो, Il a revêtu de la chair. उहाँले शरीरलाई पहिरिनुभयो, Il a été semblable à nous en उहाँ toutes हामी choses. जस्तो हुनुभयो सबै Il कुरामा, est allé à la croix pour nous. क्रुसमा जानुभयो हाम्रो लागि, Il est mort pour son उहाँ église. मर्नुभयो आफ्नो मण्डलीको लागि, Il a racheté son église. उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई त्यो पैसा र आफ्नो रगतले छुटाउनु भयो। Alors dis à ton voisin त्यसकारण छेउको मान्छेलाई भन्नुहोस् que l'humilité नम्रता vous fasse regarder les uns et les autres étant supérieurs à vous. एकअर्कालाई आफूभन्दा ठुलो प्रकारले नहेरौँ। Amen. आमेन। Que chacun de vous, हामी प्रत्येक au lieu de considérer ses propres intérêts, आफैलाई म सबैभन्दा ठुलो भन्नु छोडेर considère ceux des autres. अरूलाई चाहिँ भन्नुहोस्। Amen. आमेन। Parce que c'est ce que le Seigneur a fait pour lui. त्यही परमेश्वरले हाम्रो लागि गर्नुभयो। Il n'a pas considéré son intérêt personnel. उहाँले आफूलाई के इच्छा लाग्छ त्यो भन्नु भएन, Il a considéré notre intérêt. तर हामीलाई के इच्छा लाग्छ त्यसलाई हेर्नुभयो। Amen. आमेन। La parole de Dieu nous dit ceci. वचनले चाहिँ भन्दछ, Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du कि Saint-Esprit? तिमीहरू जान्दैनौ तिमीहरू पवित्र आत्मा मण्डली हौ, सब मन्दिर हौ, मन्दिर। हामी परमेश्वरको मन्दिर हौ। Amen. आमेन। Nous sommes le temple du Saint-Esprit हामी पवित्र आत्मा मन्दिर हौ que vous avez reçu de Dieu. जुन हामीले परमेश्वरदेखि पाएका छौँ। Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, र तिमीहरू आफ्नै होइनौ, car vous avez été rachetés à un grand prix. किनभने तिमीहरूलाई ठुलो मूल्य तिरेर किनेको छ। Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, यसै कारण तिमीहरूको शरीरमा र आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर, qui appartient à Dieu. जो चाहिँ परमेश्वरको हो। Amen. आमेन। Nous avons été rachetés par Jésus. हामी प्रभुबाट छुट्याइएका मान्छे हौ Et nous sommes son église. र हामी उहाँको मण्डली हौ। Amen. आमेन। Regarde ton frère. तपाईँ छेउको मान्छेलाई Et हेर्नुहोस्, sache que c'est lui l'église de Dieu. जान्नुहोस् कि ऊ चाहिँ परमेश्वरको मण्डली हुनुहुन्छ। Quand tu regardes Dieu, जब तपाईँ परमेश्वरलाई हेर्नुहुन्छ, humilie-toi. तपाईँ आफैलाई नम्र पार्नुहोस्। Amen. Comme le Seigneur nous a जस्तो regardés, परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुभयो, il est venu servir. उहाँ आउनुभयो र काम गर्नुभयो। Sers ton frère. आफ्नो दाजुको काम Sers ta गर्नुहोस्, soeur. आफ्नो दिदीको काम गर्नुहोस्। Amen. आमेन। Soumets-toi. तपाईँ होचिनुहोस्, Humilie-toi. आफैलाई नम्र Et तुल्याउनुहोस् Dieu va t'élever. र परमेश्वरले तपाईँलाई उचाल्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई उचाल्नुहुन्छ। Amen. आमेन। Car le Seigneur a racheté son église परमेश्वरले तपाईँलाई मण्डली बनाउनु भएको छ, avec son sang. आफ्नो रगतले छुटाउनु S'il भएको a छ। donné son sang, यदि परमेश्वरले आफ्नो रगत दिनुभयो, ça veut dire que c'était la chose la plus importante. भन्नु खोजेको त्यो कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो Et tu es la chose la र plus importante. तपाईँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुनुहुन्छ C'est ça l'église. र त्यही हो मण्डली। Pourquoi je parle? किन म मण्डलीको बारेमा आज बोल्छु? Je veux vous montrer comment तपाईँलाई Dieu देखाउन s'est चाहन्छु sacrifié. कसरी चाहिँ परमेश्वर हाम्रो लागि बलि चढ्नुभयो, Afin que nous puissions regarder son œuvre कि हामी उहाँको कामलाई हेर्न सकौँ comme étant quelque chose de saint. एउटा केही कुरा पवित्र अनुसार। Afin que lorsque nous allons nous investir dans son œuvre, जब हामी उहाँको काम गर्छौँ que nous puissions nous donner au maximum. कि हामी म्याक्सिमम दिन सकौँ, Amen. जति गर्न सक्छौँ, कि केही कुरा Ne puisse venir remplacer पनि आएर l'église dans nos vies. मण्डलीलाई हाम्रो ठाउँ लिन Le नसक्छ। Seigneur dit qu'il est la tête de l'église. परमेश्वर भन्नुहुन्छ मण्डलीको शिर म Et हुँ nous sommes le corps. र हामी चाहिँ शरीर हौ। Amen. आमेन। Donc nous avons besoin d'être soumis à यसै lui. कारण हामी पहुँचिनु पर्दछ परमेश्वरमा, Parce que un corps किनभने एउटा शरीर qui fait ce que la tête ne fait pas, जसले गर्छ जे शिरले भन्दैन, on dit que c'est un corps qui est dysfonctionnel. त्यसलाई भनिन्छ हामी काम नलाग्ने शरीर। Amen. आमेन। Vous avez déjà vu des fous? तपाईँले देख्नुभएको छ पागल मान्छेहरू, Ça ne va pas. उनीहरूको दिमागमा राम्रो हुँदैन। Amen. Amen. Il fait des choses. उनीहरू काम गर्छन्, Il est agité. ऊ जे मन लाग्छ त्यही गर्छ। Amen. आमेन। Mais nous devons être soumis. तर हामी चाहिँ परमेश्वरमा पहुँचिनु पर्छ। L'église मण्डली est sur la terre संसारमा छ pour annoncer les vertus de Christ ख्रिस्टको मृत्युको बारेमा जनाउनको लागि au travers le monde. संसारमा। Amen. आमेन। L'église a un but. मण्डलीको एउटा लक्ष्य छ।
L'église a un objectif. मण्डलीको एउटा लक्ष्य छ Et l'objectif de l'église, र मण्डलीको लक्ष्य ce n'est pas la satisfaction personnelle, आफैलाई खुसी पार्ने कुरा होइन mais c'est le salut des âmes. तर अरूको आत्मा बचाउने हो L'église de Dieu, परमेश्वरको मण्डली c'est l'arche de Noé. नुवाको जहाज जस्तो हो Amen. आमेन L'église de Dieu, परमेश्वरको मण्डली c'est le peuple d'Israël इजरायली जातिहरू हुन् qui sort de l'Égypte. जो मिश्र देशबाट निस्किए Amen. आमेन Mais ça te prend toi, तर तपाईँ चाहिन्छ qui es le temple, जो चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्मा मन्दिर pour que हुनुहुन्छ tu puisses aller sauver les âmes. गएर उनलाई बचाउन सकेको होस् Nous sommes l'église de Dieu. हामी परमेश्वरको मण्डली Nous हौँ sommes la représentation de Jésus. हामी प्रभु येशू जस्तो Nous देखिन्छौँ sommes la main de Jésus sur हामी la terre. येशूको हात हौँ Pourquoi sa main n'a-t-elle pu? किन उहाँको हात हामीसम्म आइपुग्दैन Est-ce qu'il a arrêté d'être puissant? के उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्न र Ou bien nous sommes distraits? वा हामी नै देब्रे दाहिनेतिर हिँड्दैछौँ L'église a un but. मण्डलीको एउटा लक्ष्य छ Et c'est dans Matthieu 28, र मत्ती 28 मा au chapitre 18. मत्ती 28 को 18 मा Jésus s'est approché leur parlant ainsi. प्रभु आएर बोल्नुभयो तिनीहरूसँग Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. सबै शक्ति मलाई दिएको छ Allez! जाओ Quelqu'un dit Zao! त्यसैले भन्नु जाओ Zao! जाओ Allez! जाओ Et faites de toutes les nations des disciples. र सबै देशका जातिहरूलाई En les baptisant au nom du Père et du Fils et du पिता Saint-Esprit. र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा C'est quoi le nom du Père? तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ पिताको नाम के हो C'est येशू Jésus. येशू C'est quoi le nom du Fils? पुत्रको नाम के हो C'est Jésus. येशू हो C'est qui le Saint-Esprit? पवित्र आत्माको हो C'est Jésus. येशू नै हुनुहुन्छ Baptisez-les au nom de Jésus. तिनीहरूलाई येशूको नाममा बप्तिस गर Enseignez-leur सिकाऊ à observer जान tout ce que je vous ai जे prescrit. मैले तिमीलाई भनेको Et voici, हेर je suis avec vous म तिमीहरूसँग छु tous les jours दिनप्रति jusqu'à la fin du monde. संसारमा Le Seigneur est au milieu de परमेश्वर हाम्रो मन बीचमा हुनुहुन्छ Amen. आमेन Il est là, cette flamme qui brille au milieu du chandelier. उहाँ चाहिँ त्यो आगो हुनुहुन्छ जो जहिले जलिरहनुहुन्छ L'église n'est pas parfaite. मण्डली राम्रो छैन Parce que moi, je ne suis pas किनभने parfait. म राम्रो छु Et c'est parce que je suis dans cette अनि église. म यो मण्डलमा छु Alors, त्यसै कारण laisse-moi te dire, मलाई भन्न même दिनुहोस् si je ne suis pas यदि parfait, म धर्मी छुइनँ भने Jésus est parfait. प्रभु धर्मी हुनुहुन्छ Alors, si on peut se lever, यसै कारण हामी सबैजना उठ्नेछौँ dis à ton frère, सबको मान्छेलाई भन्नुहोस् tu es l'église de Dieu. तपाईँ परमेश्वरको मण्डली हुनुहुन्छ Et dans ton imperfection र तपाईँ राम्रो नभए est la perfection de Dieu. नहुँदा परमेश्वर राम्रो हुनुहुन्छ Parce que c'est quand tu es faible जब तपाईँ दुर्बल हुनुहुन्छ que Jésus est त्यतिखेर fort. येशू बलियो हुनुहुन्छ Alléluia. हालेलुया Laissez-moi vous dire ceci. मलाई भनिदिनुहोस् यो Nous sommes en train d'aller à un autre हामी niveau. अर्को ठाउँमा जाँदैछौँ Nous sommes en train d'aller à un autre niveau. हामी अर्को ठाउँमा जाँदैछौँ À Saint-Jérôme. सेन्टोरममा Si gloire peut jouer. Nous sommes en train d'aller à un autre niveau. हामी अर्को ठाउँमा जाँदैछौँ Merci beaucoup. Gloire. Nous sommes en train d'aller à un autre हामी niveau. नयाँ ठाउँमा जाँदैछौँ Mais nous voulons changer notre र हामी perspective. बदलिन चाहन्छौँ Nous voulons changer notre façon de voir l'église de हामी Dieu. हाम्रो कुन प्रकारले हेर्छौँ त्यसलाई बदल्न Nous चाहन्छौँ voulons nous investir. हामी त्यसमा लाग्न Nous चाहन्छौँ voulons nous consacrer. हामी त्यसमा आफूलाई बलि Nous गर्न voulons चाहन्छौँ maintenant tout donner à हामी Dieu सबै परमेश्वरलाई दिन चाहन्छौँ pour son œuvre. उहाँको कामको लागि Il a racheté à son sang आफ्नो रगतले जुन छुडाउनु भएको छ et il nous a donné tout. हामीलाई सबै शक्ति दिनुभयो Amen. आमेन Et nous sommes la représentation de Dieu क्रिस्ट जस्तो छौँ sur la terre. यो संसारमा Laissez-moi vous dire ceci. मलाई भन्न दिनुहोस् L'église, मण्डली ce n'est pas une histoire यो कुनै एउटा कथा होइन qui a commencé जुन सुरु भयो dans la chambre haute. त्यो ठुलो अर्को माथिको कोठामा L'église, मण्डली c'est l'amour de Dieu परमेश्वरको प्रेम हो envers son peuple. आफ्नो जातिप्रति Quand Dieu a créé Adam et Ève, परमेश्वरले आदम र हव्वा बनाउनु भयो en créant Adam, आदमलाई बनाउँदा il est tenté de créer son église. परमेश्वरले आफ्नो मण्डली बनाउँदै हुनु En créant Adam, आदमलाई बनाउँदा il avait déjà immolé l'agneau. परमेश्वरले त्यो थुमालाई बलि चढाउनु भएको थियो Nous sommes l'église. हामी मण्डली हौ परमेश्वरको Et laissez-moi vous dire que मलाई भन्न l'église दिनुहोस् कि मण्डली est dans la pensée de Dieu avant même que l'éternité ne soit. अनन्त हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरको दिमागमा थियो L'église, c'est une histoire d'amour. मण्डली भनेको एउटा प्रेम कथा हो Dieu a dit, je veux परमेश्वरले भन्यो म चाहन्छु mon म époux. चाहन्छु मेरो पत्नी Et il est mort à la
croix pour son क्रुसमा épouse. मर्नुभयो आफ्नो पत्नीको लागि Il a payé la note. अनि त्यो मूल्य तिर्नुभयो Il a payé le prix. उहाँले त्यो मूल्य तिर्नुभयो Et lorsque Dieu a formé जब Adam, परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो il a dit il a formé Adam à son उहाँले image भन्नुभयो आदमलाई उहाँले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो et à sa ressemblance. र आफू जस्तै Dieu a dit, परमेश्वरले भन्नुभयो je suis tellement amour. म यति साह्रो प्रेममा छु Je ne veux pas garder cet amour. म यो प्रेम म आफैलाई राख्न चाहन्न Je veux partager तर ça. म बाँड्ने छु यो प्रेम Et il a créé l'homme परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउनु भयो à son image. आफ्नो चित्रमा Et il a mis le souffle de vie. जीवनको सास लगाउनु भयो Et il a dit celui-ci, उहाँले भन्नुभयो यो c'est ma représentation. म जस्तो छ Et il a dit allez उहाँले भन्नुभयो जाऊ et multipliez-vous. र बढ्न थाल Peuplez la terre. संसारलाई भराऊ Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् c'est la mission de l'Église. मण्डलीको काम यही हो Et il est avec nous. र उहाँ हामीसँग Pour हुनुहुन्छ que nous puissions accomplir कि cette हामी mission. यो मिसनलाई पुरा गर्न सकौँ भनेर Il est avec nous उहाँ हामीहरूसँग हुनुहुन्छ pour accomplir cette mission. यो काम पुरा गर्नलाई L'Éternel dit परमेश्वर भन्नुहुन्छ dans le livre de Genèse, उत्पत्तिमा il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. एउटा मान्छे एक्लै भएको राम्रो होइन Je lui ferai une aide semblable. म एउटा उसलाई मद्दत गर्ने मान्छे बनाउँछु Et Dieu a créé र la femme. परमेश्वरले स्त्रीलाई बनाउनु भयो En créant la femme, स्त्री बनाउँदा il a vu une aide उहाँले मद्दत बनाउनु भयो qui est semblable à lui. र बनाउँदा आदमले आफू जस्तो मान्छे देख्यो En créant l'Église, मण्डली बनाउँदा Dieu a vu une aide परमेश्वरले मद्दत बनाउनु भयो जो उहाँ जस्तो थियो pour que nous puissions atteindre les pères. हामी हराएको मान्छेहरूलाई भेटाउनको लागि Les anges ne sauvent pas. एउटा स्वर्गदूतले कसैलाई बचाउँदैन Aucun ange n'annonce le salut. कुनै स्वर्गदूतले प्रचार गर्दैन Mais c'est toi, तर frère, तपाईँ भाइदियो qui est supposé annoncer le salut. मान्छेलाई प्रचार गर्नुपर्ने Il a dit, vous êtes la lumière भन्नुहुन्छ तिमीहरू du monde. संसारको ज्योति हौ Vous êtes le sel तिमीहरू de नुन la हौ terre. संसारको Peuple de Dieu, परमेश्वरको जाति nous sommes pas quelque chose de grand, केही ठुलो कुरामा छौँ quelque chose de précieux. केही बहुमूल्य Le Seigneur a donné son ईश्वरले sang आफ्नो रगत दिनुभयो pour son Église. आफ्नो मण्डलीको लागि Et nous sommes son हामी Église. उहाँको मण्डली हौ Alléluia. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble सबैजना मिलेर प्रार्थना que गरौँ le Seigneur, en cette nouvelle année qui नयाँ rentre, वर्षमा जुन आउँदैछ qu'il puisse nous donner उहाँले हामीलाई दिनुहोस् l'avantage de son esprit, उहाँको आत्मा afin que nous puissions maintenant être cette Église-là त्यो मण्डली बनिनको लागि qui aide le Seigneur जसले परमेश्वरलाई मद्दत गर्छ dans l'œuvre qu'il a laissée sur la terre. काम उहाँले संसारमा छोड्नुभयो Nous voulons être des ouvriers हामी utiles. एउटा काम लाग्दो मान्छे बनिन चाहन्छौँ Alléluia. Éternel des armées, Papa, nous venons te remercier pour ta grâce. तपाईँमा आउँदछौँ Nous venons te remercier pour ton amour, धन्यवाद Seigneur Jésus. दिन्छौँ त्यो प्रेमको लागि प्रभु यीशु Merci d'avoir versé de ton sang à la croix, धन्यवाद आफ्नो Papa. रगत त्यो क्रुसमा भोगाउनु भएको लागि Merci, Papa, d'avoir versé ton sang. आफ्नो रगत भोगाउनु भएको लागि Papa, tu nous as formés de ta côte, तपाईँले Éternel. तपाईँ आफ्नै बनाउनु भयो Tu nous as rachetés par ton sang, आफ्नो Seigneur, रगत ल्याएर छुटाउनु भयो afin que nous soyons semblables à toi, Papa. हामी तपाईँ जस्तो हुन सकौँ Et que nous puissions, Papa, toucher ce que tu n'arriverais pas à toucher. हुन सकौँ जुन तपाईँले छुट्नु Que nous soyons tes mains, Seigneur. हामी तपाईँको हात बनिन Que nous soyons tes pieds, हामी Seigneur. तपाईँको पाउ बनिन सकौँ Aide-nous à être ta मद्दत bouche, गर्नुहोस् Seigneur. तपाईँको मुख बनिन Aide-nous à être tes yeux, Papa. तपाईँको आँखा बनिन Aide-nous à être ton chemin, तपाईँको Seigneur. बाटो बनिनको लागि Aide-nous, Papa, à atteindre encore le monde perdu, Seigneur. संसारमा हराएको मान्छेलाई भेटाउनु Permets-nous d'être consacrés à toi encore, Seigneur. तपाईँमा लागिरहने बनाउनु Aide-nous à nous offrir à toi encore, Papa, comme un बलि गर्न sacrifice. सक्छौँ एउटा बलिको रूपमा Oramandorolobo shatariararaba santararabaha. Ekendorolobo seteriararaba santararabaha. Oh Jésus, oh Jésus, Éternel des armées, Papa, lave-nous, Père éternel, Papa, de toute incrédulité, Seigneur. Illumine, Papa, les yeux de nos cœurs encore, Seigneur, afin que nous puissions connaître, Papa, ta volonté, Seigneur. Ta volonté que nul ne périsse et que tous parviennent à la repentance, Papa. Aide-nous à être des agents de repentance, Seigneur. Utilise-nous pour apporter ton salut encore, Seigneur, au travers de ce monde perdu, Seigneur. Papa, nous voulons te servir, Papa. Nous ne voulons pas être des vases inutiles dans ta maison, Seigneur. Mais nous voulons te servir avec tout ce que nous avons, Seigneur Jésus. Dans
Dans le nom de Jésus, alléluia, Éternel des armées, nous venons humblement devant toi, Seigneur. Sonde-nous et connais-nous, Seigneur. Regarde-nous, Seigneur Jésus. Papa, prends nos faiblesses, Papa, transforme-les en force. Prends nos fardeaux, Seigneur Jésus, et donne-nous ton fardeau, Seigneur. Donne-nous l'amour des âmes perdues, Seigneur. Donne-nous le désir, Papa, oh Papa, de faire croître ton Église à Saint-Jérôme. Donne-nous l'amour des perdus à Saint-Jérôme, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre, Papa, pour nos désirs personnels, Seigneur. Mais comme tu t'es humilié, Seigneur Jésus, comme tu as vêtu de la chair, Papa, comme tu t'es détourné, Papa, de ta gloire, Seigneur, comme tu t'es dépouillé de toi, Seigneur, aide-nous à nous dépouiller de nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à nous détourner de la chair, Seigneur. Aide-nous à marcher selon ton esprit, Papa. Mets en nous ton désir, Seigneur. Jésus, alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à faire ta volonté, Papa. Aide-nous à marcher dans ton sentier, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Nous voici encore, Seigneur. Nous voici encore dans ta présence, Papa. Nous voici encore dans ta présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Peuple de Dieu, le Seigneur est venu. Et nous ne voulons pas rencontrer le Seigneur en errant. Mais nous voulons juste servir Dieu avec tout ce que nous avons. Parce que le Seigneur a versé son sang pour son Église. Alléluia. Oh Jésus. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, oh Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Que le Seigneur crée en nous des cœurs purs et que nous soyons disposés à le servir. Regardons-nous les uns les autres comme étant des serviteurs. Amen. Il y a ton frère. Tu es l'Église. Tu portes la gloire de Dieu. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Tu es l'Église. Tu portes la gloire de Dieu. Alléluia. Si on peut battre encore la main. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Saluez vos frères et sœurs. Pour tous ceux qui veulent aller à Montréal.